नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, रजिस्टर्ड वैल्यू इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल एसेट्स and social. In the last video, we have discussed on outcome funders, risk investors, third-party evaluators, etc. Today, we shall discuss intermediary product manager, all-in funds, SIF funds in SSEs. These entities are specialized in result-based finance. So these are specialized in result-based finance, aimed at solving pressing issues. They are responsible for aligning all partners together. So what are the key partners in DIB structures? Number one, social provider oblique implementation agencies. मोटिवेशन क्या रहता है? To access pooled and continuous funding to achieve uninterrupted coordinated action on the ground. तो फंड की कमी नहीं होती, मैन पावर की कमी नहीं होती, विलिंग डोनर्स की कमी नहीं होती, विलिंग वर्कर्स की कमी नहीं होती और काम अनइंटरप्टेड कोऑर्डिनेटेड वे में चलता रहता है। रोल क्या रहता है? टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स टू जनरेट सोशल इम्पैक्ट फॉर द टारगेट बेनिफिशियरीज। सो ये इनका रोल रहता है कि वो सोशल इम्पैक्ट जनरेट करें टारगेट बेनिफिशियरीज और इसमें एंटिटीज शामिल होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट एंड सोशल एंटरप्राइजेस एटसेट्रा। आउटकम फंडर्स भी इनमें शामिल रहते हैं। मोटिवेशन उन्हें ये रहता है टू फंड यूजफुल प्रोजेक्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट एट ग्रास रूट विदाउट द रिस्क ऑफ बैकिंग इन इफेक्टिव सॉल्यूशंस। क्योंकि आउटकम फंडर सक्सेसफुल पे फॉर सक्सेस फंड के अंदर देता है पैसा, तो इनइफेक्टिव सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, पैसा बेकार नहीं जाता है और अच्छा सोशल आउटकम आता है और सोशल इम्पैक्ट आता है। रोल ये रहता है कि पे द इन्वेस्टर देयर प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट अपफ्रंट। सो जो लेंडर करते हैं, रिस्क इन्वेस्टर करते हैं, उनको ये लोग पैसा वापस करते हैं, विद इंटरेस्ट करते हैं, विद मोटिवेशन। सीएसआर डोनर्स, फाउंडेशंस, रिटेल इन्वेस्टर और गवर्नमेंट इस टाइप की एंटिटीज में शामिल होते हैं। इसके बाद आ जाता है रिस्क फंडर और इन्वेस्टर। तो रिस्क इन्वेस्टर का क्या मोटिवेशन रहता है कि टू गेट बैक द इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 to 8% if targets are met or to lose a part of the amount if they are not met। तो यदि सोशल आउटकम, सोशल इम्पैक्ट सक्सेसफुल होता है तो इन्हें 4 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है और इसमें लूज करने की भी उतने ही चांसेस रहते हैं यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए ये ऐसे कामों को ही फंड करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जो टेस्टेड हो। टू सप्लाई अपफ्रंट कैपिटल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड गेट पेड बाय द आउटकम फंडर। तो ये शुरू में ही पैसा सप्लाई। इनके अंदर एंटिटीज विद कैपिटल मार्केट एक्सपर्टीज, डिसिप्लिन, हु कैन ब्रिंग द रिगर ऑफ डिस्क्लोजर नॉर्म्स टू सोशल मार्केट। इसी टाइप की एंटिटीज इसमें होती है। इसके बाद रोल आता है इंडिपेंडेंट एवेल्युएटर का। इसको मोटिवेशन रहता है टू प्रोवाइड ट्रू अनबायस्ड मेजरमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट जनरेटेड, टू ले आउट द आउटकम पैरामीटर्स, measure and evaluate the impact against the target set in the contract। So ये external organizations होते हैं who have expertise in designing, assessment and evaluating different outcomes। Now intermediary और program manager भी इसमें काम करते हैं to solve social and environmental issues। तो इनका complex को आसान करने का काम है। To match interested partners, negotiate the terms of contract and perform duty। तो entities
with result-based financing can also be the government. Government भी इसमें शामिल हो सकती है और result-based financing इनको मिलता है. Now, what are the pros and cons of DIB structures? DIBs are apt for program whose implementation models already have a proof of concept, जिसके अंदर अच्छा खासा पहले से ही सक्सेस स्टोरीज हो, and where the outcome choice have well defined and measurable qualitative metrics, surrogates, as opposed to outcomes that are intangible. DIBs will not work for the projects who have no proven pilots in price or जो काम फर्स्ट टाइम हो रहा है उसमें ये पैसा नहीं डालते हैं और रिक्वायर सिग्निफिकेंट इनोवेशन टू इम्प्लीमेंट, और या उसमें स्पेशल इनोवेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी पैसा डालेंगे. Similarly, it will not be suited to projects that have multiplicity of variables. एक सिंगल में काम करते हैं और where outcomes cannot be linked to the inputs, interventions by the social provider, or where the solutions that need implementing is not an intervention but a product or two. So ऐसे कामों में ये लोग नहीं जाते हैं. The DIB route becomes economical for relatively large projects that need large investments. क्योंकि large investment होता है, large projects होते हैं, तो इनमें लगातार पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, मैन पावर रिटेन की ज्यादा जरूरत रहती है, तो उनके लिए ये DIBs इकोनॉमिकल पड़ते हैं क्योंकि अनइंटरप्टेड वर्क चलता है. Service provider must also have the requisite ability to scale up to reasonably achieve the outcomes laid out and able to absorb the additional monitoring and oversight that comes with financial structuring involved in DI. So, what are the examples of DIBs in India and other jurisdictions? India is among the few nations that are examples of DIBs in India and other jurisdictions. India is among the few nations that are in the forefront in terms of concerted activities towards the mainstream of DIBs. The quality education DIB with a total value of USD 10 million focuses on improving literacy and numeracy of 2 lakh children in Rajasthan, Gujarat, Delhi, and has multiple service providers such as KEF, Gyanshala, and SAR, such as girl child education, quality education, Utkrisht, etc. India is yet to see examples where the government steps in an outcome funder, in which case these bonds would be referred as social. तो ये जो जब गवर्नमेंट इनमें स्टेप इन करती है तो ये आउटकम फंडर नहीं रहती बल्कि इसको सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बोला जाता है. The United Kingdom pioneered in social impact bonds model and its government had a central role to play in this. So UK government, UK kingdom अच्छा रोल अदा कर रही है. Further, several outcome funds for multiple impact bonds have been launched in UK, including the Innovation Fund. We supported 10 social impact bonds for education and employment for disadvantaged young people. In the USA, impact bonds are better known as pay for success projects. तो USA में इन्हीं को pay for success projects बोला जाता है. Here too, federal support has been observed to play an important role. For instance, the Social Impact Partnership to Pay for Results Act was passed in 2018, and it aims to support outcome-based financing and provide funding from Treasury for social impact partnership, including PFS projects.
सो DIBs कैसे इंडिया में बेनिफिट कर सकते हैं सोशल सेक्टर एंटरप्राइजेस को या सोशल सेक्टर एक्सचेंजेस को? The SSE platform can support social enterprises, both NPOs or for-profit enterprises, large donors like CSR contributors and high net worth individuals, philanthropic donors, by providing scale-up avenues to galvanize funding to credible social impact creating opportunities. तो इन दोनों को ही क्योंकि इसमें ह्यूज फंड्स की जरूरत रहती है तो एनपीओ को भी फायदा होगा, फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस को भी फायदा होगा और लार्ज डोनर्स सीएसआर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको, क्योंकि वो पे फॉर सक्सेस मॉडल पर भी चलते हैं, हाई इंडिविजुअल नेटवर्क जो पे फॉर सक्सेस मॉडल पर चलते हैं, उनके लिए डेट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बहुत काम की चीजें हैं. Therefore, it can help DIBs access a greater spread of CSR donors, risk investors to attract funding for social enterprise. While these service providers, that is social enterprise, commit to report requirements on the SSE to signal credibility and performance, companies, particularly smaller companies, trying to solve their CSR development strategy can rely on the SSE for less complex ways to invest up to 100% of their funds. क्योंकि छोटे जो CSR फंडर हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी मैन पावर नहीं होती कि वो अपने आप से काम कर सकें, तो वह इन डेवलपमेंट बॉन्ड्स के द्वारा काम कर सकते हैं. A listing of DIBs on SSE can enable showcasing of programs and listed under each DIB to a more diverse and larger set of funders, including by philanthropic contributors as potential outcome funders. For example, a HNA donor may be pitched with a proposition of a donation of, say, 50,000 rupees. Is to be paid only if two low-income, low-skilled youth are placed in jobs with income of over 15,000. With significant reporting and transparency in DIB structure, it can help donors to get over their apprehensions of donating to fraudulent or ineffective service providers and make the donation only if the outcomes are achieved. So, this is important. It can help build a lot more trust for the philanthropy market, which is estimated at over rupees 35,000 crore. तो ये 35,000 crore की मार्केट है. Also, through the infrastructure created by SSC, donors can be issued online receipts, etc., rather than having follow up with individual. तो जैसे ही आपने SSC को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा दिया, आपको उसी समय रिसीट मिल जाएगी, वैलिड रिसीट मिल जाएगी, कुछ आपको फॉलो अप करने की जरूरत है और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता. In addition, DIBs can enable investors to impact investors by acting as a risk investors and placing their money with selected service providers and earn a small return on their investment. तो ये रिस्क इन्वेस्टर्स का भी पार्ट हो सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर, और कुछ अपना पैसा भी कमा सकते हैं if the service provider deliver on results. So, this is for today. We should discuss the next material in the next. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.